Good morning, students. Today we are going to discuss the next topic that comes under staffing, students, and the name of the next topic is, students, selection process. Right, students? As you know, students, we were discussed in the very previous video about the types of external source of recruitment. There are two steps that comes under staffing process, students, that is recruitment and selection. Recruitment, searching for the prospective candidates and apply them for the job in the organization. It is known as recruitment. It is a positive process, students. Right now, what do you mean by the term, students? Here, selection. Selection is a negative process because only the vacancies are available in the organization. That much candidates has to be selected and rest of the candidates are rejected. So the selection is a negative process and recruitment is a positive process. In the previous videos, students, I have already discussed with you the staffing process, and I told you that the staffing process has to be written in the exam, or you have to learn from chain wise, step by step. You don't have to change the steps because it is a process. Similarly, students, today we are going to discuss the selection process, students. Now from selection processes that comes under staffing, you have to learn the step by step this topic, right, students? Don't shuffle the steps, students. अगर आपने steps को ऊपर नीचे कर दिया, students, तो ये पूरा का पूरा process गलत हो जाएगा और बोर्ड में एग्जाम में you will not get the full marks, students. So selection process, students, before starting the selection process, I would like to tell you, students, what do you mean by the term selection process here? यहाँ पे selection process का क्या मतलब है, students? Selection process means, students, whenever the candidates are apply for the job in the organization, what are the steps has been followed in interview, that comes under selection process. Right, students, एक के बाद एक क्या इंटरव्यू में आप फेस करते हैं, what are the steps to be followed by you, what are the steps to be passed by you in the interview process in any company, factory, firm, organization. So students, that comes under selection process under staffing, and students, it is going to be very much important topic, students, for your board exam. Right, students? Of course, students, कल को आप लोग भी किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी जॉब के लिए जाएंगे. You have to apply for the job and you are going for any interview in MNC, multinational corporation, or in a company or in a factory. So what are the stages passed by you in interview process? That comes under selection process. आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, आज हम लोग इसे पढ़ेंगे. So let's start, students. Selection process. Right, students, the very first is preliminary screening. Preliminary screening का मतलब होता है, students, the application form. कंपनी application form देगी candidates को to fill up the application form and attached your qualification, your experience along with. Right, students, take an example कि एक XYZ कंपनी है, वहां पर फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी अवेलेबल है and candidates are apply in XYZ company as a post of finance manager. Let's take it in your mind as an example, then you will easily understood कि किस तरीके से what are the steps to be followed while applying for the finance manager, या while applying for any post. They can take the example of a finance manager in XYZ company. Candidates are applied in the organization and the candidates are required to fill the application form, students. Under application form, each and every detail has to be filled by the candidates, and along with the application form, the experience certificate, the qualification certificate, and other extra qualification certificate has been attached with the application form. And then, students, after depositing the application form, the experts has to scrutinize, has to screen कि कौन से कैंडिडेट्स को हमें आगे इंटरव्यू के लिए बुलाना है, कौन से कैंडिडेट्स को हमें आगे इंटरव्यू के लिए भेजना है और किन कैंडिडेट्स को हमें नहीं भेजना है. Right, students, I hope this is very much clear to you. So let's discuss step by step. Students, I repeat, इनको you have to learn step by step. आपको स्टेप ऊपर नीचे नहीं करने, because it is a process. अगर आपने स्टेप्स ऊपर नीचे कर दिए तो वो चेन टूट जाएगी, स्टूडेंट्स, इंटरव्यू की. Right, students, so let's discuss very first preliminary screening. The application form is provided to the candidates on request. It asks for the written record of qualifications, experience, and other qualities of the candidates. The application blank are properly screened to select the candidates who are to be given the employment test are called for an interview. Right, students, after screening, जो candidates pass हो जाते हैं, जो candidates की screening हो जाती है in the application form, right, students, application form उनके checked हो जाते हैं और preliminary screening हो जाती है by the experts in the company, तो they are called for the next step.
and the next step is selection test, selection interview, selection test. The very first, so students, it is very much clear to you, the very first process under preliminary screening is to scrutinize the form of the candidates. That form is known as application form or the application blank of the candidates. Right students, usko scrutinize karne ke baad the next step is selection test. Now students, what do you mean by the term selection test? Selection test is a general types or general kind of test. It is not a proper interview test. Right students, as I told you earlier, you are applying in XYZ company for the post of finance manager. यहाँ पर आपसे फाइनेंस मैनेजर की इन डेप्थ नॉलेज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा. यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन होगा. आपकी पर्सनैलिटी, एबिलिटी, ट्रेड टेस्ट, हॉबीज के बारे में जनरल डिस्कशन होगा बाय द एक्सपर्ट्स. दैट कम्स अंडर द सेकंड राउंड, दैट इज कम्स अंडर द सेकंड टेस्ट, दैट इज नोन एज सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स 5 तरीके के टेस्ट होते हैं. सो लेट्स डिस्कस द 5 टेस्ट दैट कम्स अंडर सिलेक्शन टेस्ट स्टूडेंट्स. So after preliminary screening students, the second step that comes under selection process is selection test. Let's discuss students. These tests are being widely used to select persons for various jobs. The following types of tests are given to the candidates. These are the 5 types of tests which are given to the candidates and which are discussed by the experts from the candidate one by one students. The very first is students intelligent test. आपका IQ लेवल मेजर किया जाएगा. कैंडिडेट्स का IQ लेवल मेजर किया जा रहा है. आई रिपीट अगेन, दिस इज अ जनरल टाइप्स ऑफ टेस्ट, जनरल काइंड ऑफ टेस्ट रिलेटेड टू योर जॉब ऑफ कोर्स. राइट स्टूडेंट्स, लेकिन ये आपकी इन डेप्थ नॉलेज ऐसा फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर के लिए नहीं है, वो उसके नेक्स्ट स्टेप होगा. सो लेट्स कम द फर्स्ट टेस्ट दैट कम्स अंडर सिलेक्शन टेस्ट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस टेस्ट. It is an indicator of a person's learning ability or ability to make decisions and judgment. Person's learning ability or the ability to make decisions and judgment, that comes under intelligence test. The experts वो एक जनरल बातों से पता लगा लेते हैं कैंडिडेट्स की IQ लेवल, इंटेलिजेंट टेस्ट लेवल क्या है regarding the ability to make decisions and regarding the judgments. I hope the very first test will be clear to you. That comes under selection test. Now come to the second test. The second test students is aptitude test. Aptitude test का मतलब वो स्टूडेंट्स ये होता है कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की न्यू स्किल्स क्या है, लर्निंग स्किल्स क्या है उसकी, न्यू एबिलिटी टू लर्न स्किल्स. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस द एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स. इट इंडिकेट्स द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप. राइट स्टूडेंट्स, लर्निंग न्यू स्किल्स अबाउट द न्यू डेवलपमेंट, किस तरीके से वो एक नई स्किल्स को सीखता है काम में. राइट स्टूडेंट्स, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है स्किल्स को सीखने के बाद, दैट कम्स अंडर एप्टीट्यूड टेस्ट. राइट स्टूडेंट्स, देन पर्सनैलिटी टेस्ट. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आज की डेट में कंपनी, फैक्ट्री, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनैलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एनी स्टूडेंट, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल. मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. पर्सनैलिटी टेस्ट भी मेजर किया जाता है. पर्सन कैंडिडेट्स के इमोशंस क्या है, राइट स्टूडेंट्स, उसका बोलने का तरीका क्या है, हाउ ही और शी बिहेव्स, हाउ द कैंडिडेट बिहेव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट स्टूडेंट्स, व्हाट आर द मैनर्स, व्हाट आर द एटिकेट्स, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी के अंदर मैच करी जाती है स्टूडेंट्स बाय द एक्सपर्ट्स. सो अंडर पर्सनैलिटी टेस्ट, दिस टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू पर्सन्स इमोशंस, reactions, value system, etc. Right student, this test judge the overall personality for the job. Right student, this test judge the overall personality for the job. The third test that comes under selection test is students personality test. It is supposed to be the very important test student. Now come to the trait test. Right students, what do you mean by the term trait test? Trait test means आपकी existing skills क्या है. Right students, experts with the help of conversation find out from each and every candidate कि उनके existing skills क्या है. Right students, trait test is used for existing skills. कि at present आपको क्या existing skills है, at present आपको कितनी knowledge है. Right students, so let's discuss trait test. These tests measure the existing skills, professional knowledge and proficiency of the individual. Professional knowledge, proficiency of the individual and the existing skills. सर अभी आपने एप्टीट्यूड टेस्ट में भी यही बताया था. नो स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में एक डिफरेंस है. देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट. इन एप्टीट्यूड टेस्ट न्यू स्किल्स, लर्निंग फॉर न्यू स्किल्स इज रिक्वायर्ड, एंड इन ट्रेड टेस्ट द नॉलेज अबाउट द एक्जिस्टिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड. I repeat again students, in aptitude test
the learning of new skills are required, right students, by the experts. And trade test, it measures the existing skills of the candidates, right students. So let's discuss trade test. These tests measure the existing skill, professional knowledge and proficiency of the individual. The difference between aptitude test and trade test is that the former measures the potential to acquire skills and the later the actual skills possessed. I repeat, the former measure the potential to acquire skills. Former मतलब आपका aptitude test. The later the actual skills possessed. Later मतलब trade test. So aptitude test for learning new skills for future skills and trade test आपकी present skills proficiency, आपकी professional knowledge कितनी है. Right students, I hope it is very much clear to you. Now the fifth one is students interest test. Now what do you mean by the term interest test? जॉब में कितना इंटरेस्ट है, जॉब के सराउंडिंग्स के बारे में आप कितना जानते हैं स्टूडेंट्स. as you are going as a candidates are going for the interview of a finance manager, तो फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें, राइट स्टूडेंट्स, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें उनको कितनी पता है कैंडिडेट्स को, दैट कम्स अंडर इंटरेस्ट टेस्ट, राइट स्टूडेंट्स. सो these tests are used to know the interest or involvement of the person for the job. Interest of a person for the job, कितना इंटरेस्ट है उसका for the job, जॉब के लिए, for the post of finance manager as an example. So I hope students, in selection process the very first step is preliminary screening, right students. एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाता है, स्क्रीन किया जाता है और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है किसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर, सिलेक्शन टेस्ट. नाउ सिलेक्शन टेस्ट यू हैव रेड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट स्टूडेंट्स. द वेरी फर्स्ट इज इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट. Right students, the difference between aptitude test and trade test is now very much clear to you students. ये टेस्ट बेटा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इन टेस्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं these are basically 8 steps. इन 8 steps को आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे. You have to learn and write chain wise, step wise, because it is a process students. Now the third one is students, third step is employment interview. Now this is supposed to be the main interview students. The candidates are coming for the post of finance manager. Now the panel has been seated. पैनल होगा, एक्सपर्ट्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, स्टाफिंग मैनेजर होगा और कैंडिडेट को एक एक करके बुलाया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर. अब फाइनेंस मैनेजर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कितनी नॉलेज है आपको, क्या एक्सपीरियंस है आपको, इससे पहले आप क्या काम करते थे, कहाँ काम करते थे, वहां से आपने क्या सीखा. दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द क्वेश्चनिंग बिटवीन द इंटरव्यूई एंड द इंटरव्यूअर और द एक्सपर्ट्स. That comes under employment interview. Of course students, यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, रिलेटेड टू वेजेस एंड सैलरीज, रिलेटेड टू द टाइम ड्यूरेशन, राइट स्टूडेंट्स. वो अपनी क्वेरीज, पर्सनल क्वेरीज भी और जॉब से रिलेटेड क्वेरीज भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, दिस इज सपोज टू बी द मेन इंटरव्यू जिसके बेसिस पर कैंडिडेट्स फाइनलाइज किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज रिगार्डिंग फाइनेंस मैनेजर. As I give you the example कि यहाँ पर आप इस टॉपिक को पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि the candidates are apply for XYZ company as for the post of finance manager. Right student, it is an example. So employment interview is a formal, in-depth conversation conducted to evaluate the applicant's suitability for the job. Right students, to evaluate the applicant's suitability for the job, the experts ask questions from the candidates to test his professional knowledge related to job. Right students, the experts are asked questions from the candidates to test his professional knowledge related to job. I hope students it is very much clear to you. So this is known as employment interview students. So the candidates who qualify the test are called for the interviews. To conduct the final interview, a panel of experts are called. राइट स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स होंगे वहां पर और वहां पर कौन होगा, स्टाफिंग मैनेजर, एचआरएम मैनेजर विद मैनेजमेंट, सब लोग बैठे होंगे और एक एक करके क्वेश्चंस पुट अप करेंगे कैंडिडेट से एंड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड वन बाय वन. राइट स्टूडेंट्स, टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड. द एक्सपर्ट्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट टू टेस्ट हिज प्रोफेशनल नॉलेज. राइट स्टूडेंट, टू टेस्ट हिज प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट द जॉब. इंटरव्यू गिव चांसेस टू कैंडिडेट्स ऑल्सो टू क्लैरिफाई द क्वेरीज regarding salary, working condition, posting and other things also. I hope students it is very much clear to you. Now after the interview students,
आफ्टर द इंटरव्यू जिनका कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो जाता है, नाउ दिस इज सपोज टू बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ स्टेप है स्टूडेंट्स इसके अंदर, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स? जनरली स्टूडेंट्स कंपनी दो एड्रेसेस मांगती है रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स। ये कैंडिडेट्स के कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, एक्वेंटेंस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स, या जहां पर वो प्रीवियस जॉब करते थे उनके एड्रेस मांग सकती हैं कि अबाउट देयर बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन नोन, राइट स्टूडेंट्स। अब ये बेटा हर जगह होने लगा है। पहले ये होता था स्टूडेंट्स, जैसे कि टेक एन एग्जांपल कि कैंडिडेट्स मेरठ में हैं और वो दिल्ली, गुड़गांव या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, राइट स्टूडेंट्स, जॉब के लिए जाते हैं, नोएडा में जॉब के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो उनके बारे में तो वहाँ के लोगों को उतना नहीं पता होगा, उनके बारे में मैनेजमेंट और एक्सपर्ट्स इतना नहीं जानता होगा, तो उनका कैंडिडेट का पर्सनल कैरेक्टर क्या है, कैंडिडेट्स के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए वहां पर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, at the time of filling the application form, at the time of filling the blank form, application blank form, 2 एड्रेसेस देने होते थे जहां पर वो रहते हैं, जहां पे कैंडिडेट्स रहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। वो कैंडिडेट्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में बात हो सकती है स्टूडेंट्स, वो फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं या रिलेटिव हो सकते हैं। तो 2 एड्रेसेस आर रिक्वायर्ड। जनरली स्टूडेंट्स ये तब होता था जब एक शहर से दूसरे शहर में कैंडिडेट जॉब के लिए जाते थे, लेकिन एट प्रेजेंट अब हर कंपनी हर एक कैंडिडेट के बारे में रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स लेती है, right students, for safety purpose, right? So let's discuss reference and background checks. In the application form, the candidates is asked to give the names of 2 references. If the candidates qualifies the interview, then the organization prefer to check with the reference about the personal character of the candidate, right students, about the personal character of the candidate, past employment record etc of the candidate, right students। जनरली कंपनी फोन करके पूछ सकती है या ईमेल करके पूछ सकती है अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट और द पास्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। आई होप स्टूडेंट्स इट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। सो under this students, background, character, personal reputation, financial conditions, police records, past employment records, these are to be checked. जनरली स्टूडेंट्स ये रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक के अंदर आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप दैट कम्स अंडर सिलेक्शन डिसीजन स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिलेक्शन डिसीजंस? आफ्टर पासिंग स्टूडेंट्स, आफ्टर पासिंग ईच एंड एवरी हर्डल्स, आफ्टर पासिंग ईच एंड एवरी स्टेज, नाउ द कैंडिडेट हैज कम अंडर सिलेक्शन डिसीजन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज कई सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाएंगे, कई सारे कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजेक्टेड हो जाएंगे, सिलेक्शन टेस्ट में रिजेक्ट हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड इन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, राइट स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड अंडर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स स्टूडेंट्स। सो ईच एंड एवरी स्टेप कैंडिडेट्स माइट बी रिजेक्टेड, दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। नाउ सिलेक्शन डिसीजन, right students, the candidates who have passed the preliminary screening, selection test, all the types of tests, also pass for the interview, right students, और उनके रेफरेंट और बैकग्राउंड चेक्स के बारे में भी कंपनी ने पता कर लिया है। नाउ दोज कैंडिडेट्स आर कम अंडर सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन आर ऑफ 2 टाइप्स स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स की लिस्ट, दिस इज वन टाइप, या फिर दूसरा ये होगा स्टूडेंट, सेकेंड टाइप इसके अंदर ये होता है सिलेक्शन डिसीजन के अंदर कि एक ही कैंडिडेट को हम वो लोग सिलेक्ट कर देंगे जो कि आपस में डिस्कशन करने के बाद सिलेक्शन डिसीजन में वो लोग पाएंगे स्टूडेंट्स। सो सिलेक्शन डिसीजन, द कैंडिडेट हुज पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन लिस्ट। बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन अबाउट द सिलेक्शन, the views of the concerned manager, मतलब expert, that is the manager responsible for the performance of new employee is considered. I hope it is very much clear to you. So this is the main step student. Selection decision is supposed to be the main step where the candidates are to be shortlisted or finalized. कई सारी कंपनीज स्टूडेंट्स क्या कहती है, many of the companies in selection decision process वो shortlist करती है कैंडिडेट्स को, राइट स्टूडेंट्स, और कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि फाइनलाइज कर देती हैं कैंडिडेट को विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट एंड विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, राइट स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए कंपनी ने यहाँ पर एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर बाकी जो और कैंडिडेट्स है उनको भेज दिया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है कि हम लोग आपको बाकी फोन करके बताएंगे या हम लोग आपको फ्यूचर में बताएंगे, राइट स्टूडेंट्स, और कुछ एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को रोक दिया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। और जनरली स्टूडेंट्स होना ये होता है कि 2 या 3 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं सिलेक्शन डिसीजन के बाद उनको रोक दिया जाता है, राइट स्टूडेंट्स, और उनका प्रोसेस फिर आगे चलता है, राइट स्टूडेंट्स। सो देयर आर 2 थिंग्स रिक्वायर्ड दैट कम्स अंडर सिलेक्शन डिसीजन,
right? Medical examination. Of course, student, it is now very much compulsory that a candidate who apply for the job in the organization और मैनेजमेंट ने स्टाफिंग मैनेजर के साथ मिलकर, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर जिनको सिलेक्ट किया है सिलेक्शन डिसीजन के अंदर, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स है या जो एक ही खाली शॉर्टलिस्ट किया है कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट को फाइनलाइज किया है सिलेक्शन डिसीजन के अंदर, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है. दैट द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट और द फाइनल कैंडिडेट हैज बीन फिजिकली फिट or mentally fit for the job. That is the stage comes under medical examination. Now students, let's discuss medical examination. Before giving appointment letter, the candidates selected are called for medical examination. Some companies appoint their own doctors to do the medical checkup, while some companies accept the medical certificate obtained by the candidate from a qualified physician. The job offer is given to the candidate being declared fit after the medical examination. After the medical test has been passed, the job offer has been made. Now students, job offer. This is supposed to be the next important step. अगर एक कैंडिडेट सेलेक्ट किया था सिलेक्शन डिसीजन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स. एक कैंडिडेट अगर सिलेक्शन डिसीजन के अंदर मैनेजिंग कमेटी ने, एक्सपर्ट ने मिलकर सिलेक्ट किया था, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो स्टेप आगे चलता रहेगा उस एक कैंडिडेट के साथ. लेकिन सपोज करिए 2 कैंडिडेट्स या 3 कैंडिडेट सिलेक्ट किए थे, शॉर्टलिस्ट किए थे, राइट स्टूडेंट्स, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आई रिपीट, इन सिलेक्शन डिसीजन अगर 3 कैंडिडेट सिलेक्ट किए थे तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद एक कैंडिडेट को फाइनल करना होगा. अगर सिलेक्शन डिसीजन में मैनेजमेंट ने, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, सिलेक्शन डिसीजन में मैनेजमेंट ने अगर एक कैंडिडेट को फाइनल कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे फॉलो होता रहेगा. लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करिए स्टूडेंट्स कि देयर आर 3 कैंडिडेट्स दैट हैव बीन शॉर्टलिस्ट, तो उसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, जॉब ऑफर. The next step in the selection process is job offer to those applicants who have passed all the previous hurdles, मतलब all the previous tests. Job offer is made through a letter of appointment which contains the date by which he or she must report on the duty. The appointee, मतलब जो final हुआ है, must give in a reasonable time for the reporting. Right students, I hope this is very much clear to you. जिसको अपॉइंट किया है, जिसको सिलेक्ट किया है, उसको जॉब ऑफर हो जाएगी. Now the last stage that comes under selection process is contract of employment. Now what do you mean by the term contract of employment? After the job offer has been made and candidates accept the offer, certain documents needs to be executed by the employees and the candidates. Such document is the attestation form. This form contains certain details about the candidate which are checked and attested by him or her. Attestation form will be a valid record for future reference. Also, the written contract is prepared between the employer and the candidate. This is known as contract of employment, which contains job titles, duties,